So hello everyone and welcome to Career Launcher. So I hope you are aware that every Sunday at 8 p.m. we are having a static GK discussion. And if I'm audible and visible, please write yes in the comments so that we can begin today's class. So I'm having a little bit of fever, so please bear with me. I'll take the class. My voice will be slightly low, but nothing to worry. Okay. So we were somewhere here, right? We had done till question number 10. Which are the following? In the last class on Sunday, we had done this. Which of the following is not among a qualification to become a judge in the Supreme Court of India? And what was the answer? In the last class also, we had discussed it. And I hope by this time you should be answering it if you have watched the last class. Yes, good evening. Welcome to the class. What is the answer? What was the answer? So we had discussed it that there is no provision of minimum age. This is the right answer. Minimum age. Yes. Anna. So although it is little surprising, but actually nowhere it is talks about that there should be a minimum age for a Supreme Court judge. But practically speaking, of course, nobody becomes a judge of Supreme Court with an age of less than 35. That's not possible because you need a VLLB degree, then should be a High Court judge for 5 years or a distinguished jury. So of course that's not possible, practically speaking. But theoretically, there is no minimum age for High Court or Supreme Court judges. Yes, this is the right answer. And that is what you should be knowing. He should have been a judge of High Court for 5 years, advocate for 10 years, a distinguished jurist. This has not been used till now. Distinguished jurist in the eyes of in the opinion of president. Okay, distinguished jurist means expert in the field of law. It can be a lawyer or a law officer or let's say a law professor, etc. and all. That is what you should be knowing about. Where you will find these description. So which article of the Constitution talks about establishment of Supreme Court? Which article should I open to read about the eligibility criteria of Supreme Court? Anna, the removal process of Supreme Court judges. Which article should I open to read that? Anyone? Article 124. Yes, good evening everyone. 124. Yes, Nat Lakshmi, you're right. And for High Court judges, Article 217. Okay. Every article you should not remember, but the prominent ones you should know. For example, we say that Supreme Court is actually a constitutional body. So when we are saying that it is a constitutional body, it must be talking about it must be mentioned in the Constitution, and there should be a specific provision in the Constitution. So the answer is 124 for Supreme Court and 217 for High Court judges. Okay. Yes, very good. 217, right? Huh? So the next one is Supreme Court decides the dispute between center and state, between two or more states. This provision comes under which jurisdiction? So basically the idea is there are some cases where you can only directly go to the Supreme Court. For example, under let's say there is a president election that happened or vice president election happened. Okay. And the candidates who lost the election, they feel that there has been rigging or there have been some issues with regards to that. So the only place they can go is the Supreme Court. Similarly, if there is a tussle between, let's say, Union of India, I'm just giving example. There is a tussle between the central government or let's say any state government. For example, let's say the state of Tamil Nadu. In that case, for example, the state of Tamil Nadu is not liking some of the decisions of Union of India, that is the central government, and they believe that it is unconstitutional, so they can file only a petition in the Supreme Court. Okay. Similarly, if there is a dispute between two states, for example, let's say, I'm just giving example, Karnataka versus Tamil Nadu. Let's say there is a dispute on any issue. Sometimes it happens like border dispute, water dispute, or something like that. So they cannot go to any High Court. Okay. So you have to directly go to the Supreme Court. That is the only option available, and that is called as original jurisdiction. Is the right answer. Yes. Appellate jurisdiction मतलब appeal से आ रहा है. And advisory jurisdiction last year काफी news में था 140 I think 3 है ना. Criminal jurisdiction तो कोई मतलब ही नहीं बनता यहाँ पे. So original jurisdiction means originally the Supreme Court only can hear the matter, है ना. You can read about 131 article 131 in detail about that, but you should have an idea, है ना, about this. Okay. So A is the right answer to this question. Original jurisdiction of the Supreme Court. When one body versus unit of India, I mean one person versus nahi. One person versus unit of India, why should it be applied? That is very normal case. Case of Nanda Bhati versus state of Kerala. Many other cases, hai na? So in many cases, like if there is one person and the other side is the Union of India, it will go normally.
like High Court and the Supreme Court, like that. This is only for when there are two states dispute, let's say Tamil Nadu versus Karnataka. Which High Court should be hearing it? Karnataka High Court or Tamil Nadu High Court? So the answer is no High Court. There it will be directly heard by the Supreme Court. ठीक है? But of course, individual person का तो होता ही, सारा cases individual person को होता है ना? If one person is arrested by any state police, तो होता ही one person, that one person versus the state of that police of that state, है ना? तो होता ही, तो फिर वो normal case में जाता है ना? 143 is advisory jurisdiction, है ना? When so president refers the matter. अपील आता है कॉन्स्टिट्यूशन मैटर, सिविल मैटर, क्रिमिनल मैटर में हो तो अपील आता है हाई कोर्ट से, है ना? ना एक स्पेशल लीव पिटीशन होता है, कभी मौका मिले तो डिस्कस करेंगे. इफ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन रीड 136, है ना? तो अभी वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट स्पेशल लीव पिटीशन. ओके, नेक्स्ट है आइडियल्स ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रैटर्निटी. कितना बार बताया है, अक्सर न्यूज में आता है, एग्जाम में प्रीएम्बल पर क्वेश्चन आते हैं. इस बार लास्ट ईयर इन लीगल सेक्शन दे हैड आस्क्ड फ्रॉम प्रीएम्बल, बोरोड फ्रॉम व्हिच कॉन्स्टिट्यूशन? Yes, D. There was actually a revolution, French Revolution. These are taught in school days. 14 July 1789. What happened? 14 July 1789, French Revolution. Storming of Bastille Fort. These are taught in school days, है ना? So this led to, they talked about life, liberty, equality, fraternity, है ना? Everyone is equal. Liberty, है ना? Freedom of speech, freedom, equality. Everyone should be treated equally. There should not be any difference between a person from noble community or person from common man, है ना? Fraternity means brotherhood, है ना? That is what you should know, and it is mentioned in the constitution also. You can see it here. So we have seen a lot of questions with regards to that, ठीक है, from preamble, है ना? So liberty, equality, and fraternity, ठीक है. This is what you should be knowing about. Okay, we'll keep on discussing about preambles in the upcoming classes, but I want to ask one question. What is the date that is mentioned in the preamble? There is one date that is mentioned. And what is the significance of that date? Can anyone tell me? November 1949. Very good. 26 November. And what is special about this date? 26 November 1949. Great. Huh? So this date is mentioned that 26th day of November. And which date is celebrated? 26th November is celebrated as what? 26th November was earlier celebrated as Law Day. But I think since 2015 or I think 2016, we are celebrating it as Constitution Day. Okay. So it says, do hereby enact, adopt, enact, and give to ourselves. So it was adopted, the Constitution was adopted, but we waited for 2 months for full implementation. We waited for 2 months for full implementation. Some of the provisions got implemented on 26 November 1949. Some provisions of the Constitution. Okay? But actually, we waited for 2 months to fully implement the Constitution. Why? Because I'm sure you should be aware of this. If you are not aware, first I would be telling you is Poon Swaraj resolution. Go to our playlist. ठीक है, playlist में जाना. There is modern Indian history class. Modern Indian history class. The playlist is mentioned, है ना? So there we have discussed about non-cooperation movement, civil disobedience movement, etc. ठीक है. So there we have discussed about Poon Swaraj. So Poon Swaraj resolution was actually passed on 26 January 1930. That's why to remember that 20 years we waited. Poon Swaraj resolution was passed by the Congress. See what happened was in December 1929. Lahore session of Indian National Congress happened. Let me write it here. Every year, generally in December, there used to have Indian National Congress session. Indian National Congress session. Okay. So the president was Jawaharlal Nehru. And here it was decided that we will celebrate 26 January as 1930 in the next month as Poon Swaraj Divas. Or what we call it as in English as Total Independence Day. Okay. Total
Independence Day. So that is why, to remember that incident, actually we actually waited, even though by 26 November 1949 we were done with the constitution. So if the word ask ki when actually the constitution was adopted, enacted, then the answer is 26 November 1949. But when it asks about full implementation of the constitution, because some provisions got implemented here, like citizenship, fundamental right, these some provisions. You search it on Google, provisions that were implemented on 26 November 1949, provisions of the Indian Constitution. You will get some provisions. However, all the full provision was implemented on 26 January 1950. So to remember, 20 years back, we have seen Poon Swaraj resolution happening. Okay. So what we use the word full implementation of the Constitution. Okay. That is what you should be knowing. Okay. Is it clear? I hope so. This should be crystal clear. We'll be talking further about preamble because, of course, we have seen question in legal section also. They're asking questions from preamble, and preamble is very important. Okay. We'll keep on discussing about it. Okay. Let's move on. Which article of the Indian Constitution prohibits trafficking in human being? Now, are you saying it? This is actually a fundamental right. Keep lecture on Artemis mission. इस वीक तो मैंने शेड्यूल करा दिया, नेक्स्ट वीक में ओके आई विल ट्राई. सो लेट मी राइट इट. एक्चुअली मैं सोच रहा था आर्टेमिस मिशन, बट आई थॉट कि ईरान सीज फायर वाला इंपॉर्टेंट है और म्यांमार वाला लोगों ने रिक्वेस्ट किया था. ओके, लेट मी राइट इट इन द नोट्स. आर्टेमिस मिशन इस वीक में तो नहीं हो पाएगा, नेक्स्ट वीक में, बट आई ट्राई टू कवर. कोशिश करूंगा. ठीक है. ओके. So the right answer is option B, Article 23. B is the right answer, है ना? Part 3 of the Indian Constitution, है ना? So I'm sure you must be aware, prohibition of traffic in human beings and forced labor. This is actually a fundamental right. Fundamental right is Article 12 to 35. ठीक है? Traffic in human being and beggar and other similar forms of forced labor are prohibited, and any contravention shall be punishable offense. Okay, let's move on to the next one. Who had described preamble, let me write capital P, as the horoscope of the Indian Constitution? Horoscope, you understand? जो रास्ता बताए फ्यूचर का, है ना? That's actually very famous. Sometimes these are asked in the exam. Political horoscope of Indian Constitution. Mr. K.M. Munshi is the right answer, है ना? Describe the as political horoscope of the Indian Constitution, है ना? ठीक है. के एम मुंशी साहब काफी फेमस थे. कुछ और लोगों के बारे में बात करते हैं. भीमराव अंबेडकर, एवरीवन नोस, है ना? चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमिटी, है ना, ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, है ना? देन इनको एक और चीज कहा जाता है ना, मतलब कहते हैं फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, चीफ आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. दीज आर द वर्ड्स दैट आर यू बीइंग यूज्ड, है ना? चीफ आर्किटेक्ट ऑफ द Indian Constitution, है ना? अच्छा, now I wanted to ask one more question with regards to that. This person, the answer to this question is option A, but who is option B? Nani Palkhiwala, very famous person. Can anyone tell me in the field of law? Nani Palkhiwala कौन थे? Read about him. I would suggest. इनके बारे में कहीं पढ़िएगा. That is like an inspiration for you. If you are in this field, this person will be inspiration for you. So two personalities are very famous in the history of the Supreme Court of India, not as a judge but as a lawyer. Nani Palkhiwala, and there is another one is called as R.F. Nariman sir. Nahi, Fali S. Nariman sir. So he died, I think, last year or last to last year. Fali S. Nariman. His son was also a Supreme Court judge, Justice R.F. Nariman, है ना? So Fali S. Nariman was a very top lawyer. He died, I think, last year or last to last year, somewhere around at the age of 90 years. 90 के आसपास उनकी उम्र थी. और नानी पालकेवाला साहब, आई थिंक ही डाइड अराउंड 1990s, 96 या 97 के आसपास ही डाइड. ओके, यस, केशवनंदा भारती केस, ही वाज वन ऑफ द prominent lawyer. So नानी पालकेवाला सर was actually very famous in the field of law and he'll be an inspiration for you. कभी मौका मिलेगा तो इनकी कुछ बुक्स है, फेमस बुक्स ये इनकी, और इनके बारे में जानिएगा, थोड़ा सा रीड कीजिएगा कि बुक्स ऑफ फली एस नरीमन सर एंड बुक्स ऑफ नानी पालकेवाला सर. ठीक है, थोड़ा सा, आई एम नॉट सेइंग कि पूरा पीएचडी कर लीजिए, बट रफ आइडिया होना चाहिए. सो इफ समवन इज सेइंग हु इज नानी पालकेवाला, यू शुड बी नोइंग इट बिकॉज यू आर इन दिस फील्ड. ठीक है ना?
इवन सोली सुरभ जी, हाँ वो उनकी शायद 2021 वगैरह में डेथ हुई थी. सोली सुरभ जी भी काफी फेमस लॉयर थे. ठीक है, यू कैन रिमेंबर हिम आल्सो. यस. Next is who among the following is the 15th chairman of Finance Commission? This is actually done. And now we are having 16th Finance Commission. 15th Finance Commission chairman was Mr. N.K. Singh. Who is the chairman of 16th Finance Commission? I believe by this time you should be knowing. We have taken a class also. And is Finance Commission ko where will be putting? Constitutional body, statutory body, neither statutory nor constitutional. कहाँ पे आएगा ये? इस तरह क्वेश्चन AILET में पूछते हैं. हाँ, Mr. Arvind Panagaria is the 16th Finance Commission chairman. Arvind Panagaria sahab. And I'm sure you must be aware, when Planning Commission was abolished and Niti Aayog was established on 1st January 2015, he was the first vice chairman of Niti Aayog. Why I'm saying first vice chairman? Because chairman will always be the prime minister. Okay. Yes, it is a constitutional body under 280 Finance Commission. Okay. So that is what you should know. What is the job of Finance Commission? क्या काम होता है? कुछ थोड़ा सा roughly, anything? What is the job of Finance Commission of India? So it is actually first, it is a recommendatory body. When there is an कोई भी commission होती है, recommendatory body होती है. It cannot be binding on the government because government is elected by the people. So it recommends the central government how much tax devolution it should be doing it to the state. One thing. There are other things also, but ये काफी famous होता है. कितना हिस्सा टैक्स का सेंटर जो है स्टेट को दे. वर्टिकल डेवोल्यूशन, डिसोल्यूशन, हाँ वर्टिकल डेवोल्यूशन एंड हॉरिजॉन्टल डेवोल्यूशन. ठीक है, डेवोल्यूशन ऑफ टैक्स मतलब टैक्स का स्प्लिट करना है ना. और फिर स्टेट आपस में स्टेट में कैसे बटे. तो दिस इज व्हेन द सेंटर इज गिविंग इट टू द स्टेट, दिस इज कॉल्ड एज वर्टिकल डेवोल्यूशन ऑफ टैक्सेस. एंड देयर आर 28 स्टेट्स है ना, 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरी. 8 यूनियन टेरिटरी तो सेंट्रल गवर्नमेंट की टेरिटरी होती है, 8 यूनियन टेरिटरी. ठीक है, ठीक है. सो जो सेंटर 28 स्टेट्स को देंगे, मान लीजिए लास्ट ईयर 15 फाइनेंस कमीशन सेड यू शुड डिवॉल्व 41%. अब ये 41% इनके पास आया. अभी आपस में कैसे बटेगा? हाउ टू डिस्ट्रीब्यूट दैट 41% ऑफ द सेंट्रल पूल टैक्स अमंग द 28 स्टेट्स? बिकॉज यू कैन नॉट डिस्ट्रीब्यूट सेम टू सिक्किम एंड उत्तर प्रदेश. आप एक ही अमाउंट टैक्स का सिक्किम और यूपी को थोड़ी दोगे. यूपी बहुत बड़ा है ना, सिक्किम इज अ स्मॉल स्टेट. सो देयर इज एक्चुअली अ फॉर्मूला फॉर दैट, है ना. सो आई एम नॉट गोइंग इन दैट डिटेल. यू कैन गो टू अवर लाइव सेक्शन ऑफ अवर यूट्यूब चैनल. लाइव पे जाना, नीचे स्क्रॉल डाउन करना and you will get a video on finance commission. ठीक है, there I have discussed about horizontal devolution of taxes. ठीक है, जैसे होता है ना, आप जब हमारे चैनल पे जाओगे तो वीडियोस होता है, लाइव सेक्शन होता है, शॉर्ट्स होता है. तो लाइव सेक्शन में जाके नीचे स्क्रॉल डाउन करना, लाइट ब्लू कलर का थंबनेल मिलेगा. 1 महीना 1.5 महीना पहले लिया गया था वो क्लास. ठीक है, ओके. सो दैट इज व्हाट यू शुड बी नोइंग. फर्स्ट फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन कौन थे? फर्स्ट फाइनेंस कमीशन, इट वाज एस्टैब्लिश्ड वे बैक इन 1951. What is the right answer? Right answer is first my KC Negi, है ना, very famous personality. KC Negi 1951 लिख दिया, 52 कर दो. हाँ, 51 52 के आसपास. Yes, very good. CLAT aspirants are you all right? As per the Article 80 of the Constitution, what can be the maximum strength of the Rajya Sabha? अच्छा, एक चीज और पूछेंगे. 80 जब पूछ ही लिया तो एक और पूछ लेंगे. मैक्सिमम स्ट्रेंथ पूछ रहे हैं. Yes, B is the right answer. 250. So it is like this: 238, which is elected by voting by MLAs. MLAs जो स्टेट में MLAs होते हैं वो वोट करते हैं. And the rest 12 are nominated, है ना, by president. This is ideally, है ना, this is the maximum strength which is mentioned in the Constitution. But right now it is 233 plus 12, 245. ठीक है, दिस इज राइट नाउ. ठीक है, इज इट क्लियर? फुल स्ट्रेंथ, मैक्सिमम स्ट्रेंथ अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन शुड बी 250, बट राइट नाउ इट इज 245, 233 प्लस 12 नॉमिनेटेड. चलो, अब आर्टिकल 80 के बारे में पूछ लिया है. इससे पहले एक आर्टिकल आता है ना. सो अच्छा, हम आपसे ऐसे पूछते हैं. ठीक है, यू टेल मी. पार्लियामेंट, I'm giving you a hint also, comprises of
ठीक है, 3 things. What are those 3? First, yes, president election. Great, huh? So Article 79 talks about it. So it says President of India. Then it uses the word House of People. And then it uses the word Council of States. And आपको देख के डर लग रहा होगा कि ये क्या गया. So President of India, House of People is nothing but Lok Sabha, what we call it general term, but technically in the Constitution they have mentioned House of People. Council of State actually is nothing but Rajya Sabha. Generally we use this word, and this is President. So President is also a part of Parliament. That is what you should be knowing. Okay. Then it talks about Upper House, Article 80, Rajya Sabha, and then Lok Sabha. Okay. So that is what you should know. This is a very important thing. President is actually part of executive also, and head of union executive, and part of legislature also. That is great. Not only that, president appoint judges. So from judiciary also, they appoint judges and removal the president. So when the Supreme Court or High Court judge resigns, actually the person submits the resignation to President of India. Okay, recently we have seen. चूंकि बात आ गई तो बात ही कर लेता हूँ. Resignation of a High Court judge recently happened. Which High Court judge resigned? He was from which state? What was the matter? And under which article of the Indian Constitution resignation of High Court judge happens? Justice Yashwant Verma. What was the matter? पता होना चाहिए. अभी फिर न्यूज में आ गया. ठीक है. We have taken a class on that last year, but now it becomes important. ठीक है. Justice Yashwant Verma. What was the matter? Justice Yashwant Verma. क्या हुआ था? किनको रिजाइन करना पड़ा? Cash found. Actually, his parent High Court was Allahabad High Court, but few years back he was transferred to Delhi High Court. He was one of the senior judge in High Court, and he was not at home at that time. I think last year, somewhere around March की बात है, March 2025. He was not in his official residence, and I think कुछ लोग थे उनके घर में, but वो खुद नहीं मौजूद थे. And like in the storeroom, what happened was, whatever I can understand, जो मैंने न्यूज में पढ़ा उसी से मैं बता सकता हूँ. This is actually the premises of his house. So उनके घर में प्रेमाइसेस में कहीं पर एक स्टोर रूम था. ठीक है, शायद वो मतलब प्रेमाइसेस के अंदर था घर के. अब वो घर के बिल्डिंग में था या साइड में कैंपस में था, जो भी था, बट इनसाइड द कैंपस देयर वाज अ स्टोर रूम. इसमें आग लग गई, फायर. एंड आई थिंक द पीपल हु वर देयर इन द हाउस, दे माइट हैव asked Delhi Fire Services, उनको बुलाया गया होगा कि आप आग बुझाइए. So they saw a huge amount of cash. They recorded the video, passed on to Delhi Fire Services, then Police Commissioner, and the Delhi Police Commissioner then forwarded it to Chief Justice of Delhi High Court and the Supreme Court. And then the matter actually initially few days में बात बाहर नहीं आई, but later on the matter actually became very famous. After that he was transferred back to Allahabad High Court, but he was not given, in the last 1 year he was not hearing any judicial matter. वो जज थे लेकिन वो कुछ matters hear नहीं कर रहे थे because there was a huge allegation. So what happened was the two things that happened, दो चीजें हुई थी, है ना. ये मैं थोड़ा सा बता दे रहा हूँ again. When the CGI at that time made a 3-member committee, and they did the investigation. 3-member committee comprising of, I think, a Chief Justice of High Court and 2 High Court judges. And Justice Yashwant Verma, actually they asked question and they were not very much convinced. Then in August last year, under Judges Inquiry Act 1968, the matter was pursued. Okay. I'm sure you must be aware. Okay. So we have taken a class last year also. आप जाके सर्च करें YouTube पर, Justice Yashwant Verma removal process. रिमूवल करियर लॉन्चर लॉ एंट्रेंस, ऐसे पूरा टाइप कीजिएगा, यू विल गेट इट. ठीक है. काफी पुराना हो गया, 6-8 महीना पुराना न्यूज होगा या ज्यादा ही होगा. ठीक है. या चाहे तो लाइव सेक्शन में जाके आप स्क्रॉल करते जाइएगा तो आपको मिल जाएगा. ठीक है. सो प्लीज वॉच दैट, बिकॉज चीजें वही है, बस स्पीकर ने जजेस इंक्वायरी एक्ट के अंदर स्पीकर ने 3-member कमेटी बनाई थी. ठीक है. Speaker made a 3-member committee also under Judges Inquiry Act, which should comprise of Chief Justice of a High Court, the Supreme Court judge, and an eminent jurist, like a lawyer. है ना. So हाँ, तो मैटर वाज बीइंग हर्ड, है ना. तो वो चल रहा था मामला. तो द मोमेंट अभी पूरी बात कंप्लीट भी नहीं हुई थी, डिसाइडेड टू रिजाइन. ठीक है. सो विच आर्टिकल द हाई कोर्ट जज शुड बी इन्वोकिंग व्हाइल रिजाइनिंग? आर्टिकल 217 क्लॉज 3 या क्लॉज 4 है, कुछ है, आप देख लीजिएगा. आर्टिकल 217 टॉक्स अबाउट अपॉइंटमेंट ऑफ हाई कोर्ट जज एलिजिबिलिटी एंड रेजिग्नेशन आल्सो. सो व्हेन द हाई कोर्ट जज रिजाइंस,
he or she should be addressing it to the President of India, है ना. तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को एड्रेस करके उन्होंने इस्तीफा दिया. ठीक है, दैट इज व्हाट यू शुड बी नोइंग. हाँ, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स. एक क्वेश्चन आया था लास्ट टू लास्ट ईयर, हाउ मेनी स्टेट्स एंड हाउ मेनी यूनियन टेरिटरी आर देयर इन इंडिया. ये बताओ तो. अक्सर लोग कंफ्यूज करते हैं. That's why I'm asking. Yes, Article 3 is formation of new states. How many states and how many union territories? 28 स्टेट है और 8 यूनियन टेरिटरी. कैसे है ये आप सर्च कीजिए. 28 states, 8 union territory. हाँ. So formation of new state can be done only by the parliament. ठीक है. Parliament may by law form a new state. ठीक है. Increase the area, diminish the area, alter the boundaries, alter the any state. नाम भी बदलना है तो पार्लियामेंट ही करेगी. जैसे आपने देखा होगा केरला का नाम भी प्रपोज था ना केरला करने का. So that will be done only by the parliament. The state legislature may pass a resolution, but actually it is the parliament who should decide कि बाउंड्री बढ़ाना है, छोटा करना है, काटना है ना. All these things. ठीक है. एक चीज और है जो कि आर्टिकल 3 की बात होगी. Which article says India, that is ऐसे लिखा था, I think that is भारत shall be union of states. ये कहाँ लिखा हुआ ऐसे? Union of states. India that is भारत shall be union of states. आर्टिकल 1 में पहला शुरुआत ही है. ये भी क्यों बता रहा हूँ, बिकॉज आई थिंक 2 or 3 years back there was a debate about India and भारत कि इंडियाज नेम शुड बी चेंज टू भारत. बट ये था कि ठीक है फाइन, बट इट वाज मेंशन ऑलरेडी. आर्टिकल 1 टॉक्स अबाउट इट दैट इंडिया इज भारत. ठीक है. तो जैसे में व्हेन वी राइट इन इंग्लिश इट इज रिटन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, एंड व्हेन इट इज रिटन इन हिंदी लैंग्वेज इट इज रिटन भारत सरकार. ये लिखते हैं ना, इंडिया सरकार नहीं लिखते हैं. सो इट एक्चुअली यू शुड बी नोइंग इट दैट यस इंडिया इज नथिंग बट भारत. दैट इज क्लियरली मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 1. ठीक है. So no need to further claim कि नहीं इंडिया भारत है, ऑलरेडी है, इट्स ऑलरेडी देयर. इट्स मेंशन फर्स्ट आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टॉक्स अबाउट इट. ठीक है. सो ये आपको पता होना चाहिए बिकॉज ये बातें कभी कभी आती रहती. सो वी शुड बी नोइंग अबाउट दैट. नेक्स्ट इज है ना प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी. अच्छा, यू नो व्हाट इज डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी. क्या होता है? व्हाट इज डीपीएसपी? आइडिया बिहाइंड डीपीएसपी पहले बताओ. Article 51. So, directive principle of state policy says these are advices given by the constitution makers that the government should be doing it in future. And here we are talking about international peace and security, so it is referring to central government. So, constitution says that it is very advisable that the central government should ensure international peace also. We should take part in that. तो ये कहना ये चाह रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन ये कह रहा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट भारत की फ्यूचर में जब भी जरूरत पड़े तो जब भी कोई डिस्प्यूट हो उसको सॉल्व करने की कोशिश करे इंटरनेशनल लेवल पर भी, है ना. सो जैसे है ना, जैसे आपने देखा होगा नॉट न्यूट्रल इंडिया ऑन द साइड ऑफ पीस मोदी जी इन यूक्रेन एज लैंडमार्क विजिट एंड्स. व्हाई? आर्टिकल 51 है ना. कॉन्स्टिट्यूशन सेज कि आपको जो है ये भी कोशिश करना है कि वर्ल्ड में पीस बना रहे. एंड दैट इज नॉन बाइंडिंग. आई एम श्योर यू मस्ट बी अवेयर डीपीएसपी इज नॉन बाइंडिंग, बट द आइडिया इज दीज आर हाईली रिकमेंडरी, है ना. एंड ऑफ कोर्स वी हैव टेकन इट फ्रॉम वेयर, कहां से लिया गया? नॉन इन्फोर्सेबल होता है, लेकिन हाँ कोशिश इंडिया को ये करना चाहिए, भारत सरकार को, कि इंटरनेशनल पीस कायम रहे, है ना. दैट इज फ्रॉम वी हैव टेकन इट फ्रॉम आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन, द डीपीएसपी, है ना. तो इंडिया ने पास में बहुत बार ऐसा किया है. वी हैव बीन अ मेंबर, यूनाइटेड नेशन के मेंबर होना, ऑफ कोर्स दैट इज आल्सो द थिंग. फिर मेनी अदर पीस टॉक्स, है ना, उसमें कोशिश किया गया है. पंचशील प्रिंसिपल था, 5 पंचशील, मेनी अदर थिंग्स, नॉन अलाइन मूवमेंट, बहुत जगह एक्चुअली. लुक ईस्ट पॉलिसी nowadays and act east policy, बहुत जगह एक्चुअली we have tried to ensure there should be peace, and India sends officials to UN peacekeeping force. तो अभी पीस का एक अटेम्प्ट है. India sends its policemen and army men, है ना. They are being deployed at different places. For example, we had discussed current affairs में हम लोगों ने डिस्कस किया था UN mission in South Sudan. उसमें एक फीमेल ऑफिसर है and she had got gender inclusive award from UN Secretary General. What is that person? उनका नाम क्या है? It's a part of current affairs.
मेजर स्वाति शांता कुमार, है ना, ये करंट अफेयर्स का पार्ट है, पढ़िएगा। प्लीज रीड अबाउट दिस मेजर स्वाति शांता कुमार, प्लीज रीड अबाउट दैट, ठीक है। लेट्स मूव ऑन, है ना। How many members of Rajya Sabha can be nominated by president? I think this is the easiest question of the day. And can you please some sorry, some example of nomination of those people? कोई एक दो का नाम बता सकते हो? हाँ, 12 members. Like for example, former Chief Justice of India, Justice Ranjan Gogoi, was nominated from this category. Recently, his tenure was completed, है ना. So I think 2020 के beginning में he was appointed, जनवरी फरवरी के आसपास, and 2026 जनवरी फरवरी के आसपास his tenure got completed. जस्टिस रंजन गोगोई, फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, है ना, ही रिटायर्ड इन नवंबर। इन पे काफी हंगामा भी हुआ था। ही रिटायर्ड इन नवंबर 2019 एंड फ्यू मंथ्स लेटर इन द फर्स्ट हाफ ऑफ जनवरी ही वाज अपॉइंटेड nominated as Rajya Sabha MP in those 12 categories, है ना। सचिन तेंदुलकर इज आल्सो देयर, राइट। सचिन तेंदुलकर को भी इसी में से एक जमाने में नॉमिनेट किया गया था। आई थिंक जावेद अख्तर आल्सो, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आप देख लीजिएगा, कुछ प्रोमिनेंट पर्सनालिटीज हैं। सचिन तेंदुलकर तो हमको याद आ रहा है, यस यू राइट, ठीक है। सुधा मूर्ति जी भी शायद, हाँ यस राइट, हाँ ठीक है। तो ये सब आप फॉलो करते रहिएगा, है ना। अभी रिसेंटली लास्ट ईयर 4 लोगों का अपॉइंट किया गया था, नॉमिनेट किया गया था, ठीक है। लास्ट ईयर आई थिंक अगस्त सितंबर के आसपास की बात है। एक फॉर्मर फॉरेन सेक्रेटरी थे, एक लॉयर थे एंड एक हिस्टोरियन थे, ऐसे लाइक दैट, है ना। सो दैट इज व्हाट यू शुड बी नोइंग। हाँ, वेरी इंटरेस्टिंग। वाज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया व्हेन इमरजेंसी वाज इम्पोज्ड? 25 जून 25 जून 1975, national emergency. We say that it was declared by Indira Gandhi ji, right? But actually it is declared by the president of India on the advice of prime minister, है ना। तो फिर मार्च 1977 तक चला था, ऑलमोस्ट 2 साल से थोड़ा सा कम, है ना। We say कि इंदिरा गांधी जी ने, but officially you should not say this because which article? Article 352 talks about president declaring the national emergency, ठीक है, फखरुद्दीन अली अहमद। बट द थिंग वाज एक्चुअली कि ऑफ कोर्स प्रेसिडेंट इज जनरली बाउंडेड बाय द एडवाइस, द प्रेसिडेंट डज नॉट टेक द डिसीजन ऑन हिज ओन सेल्फ। इसलिए हम लोग कह देते हैं कि इंदिरा गांधी जी के जमाने में इमरजेंसी लगा, बट एक्चुअली इट वाज ऑफिशियली और टेक्निकली इन्वोक्ड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, फखरुद्दीन अली अहमद, ठीक है ना। सो दैट इज व्हाट यू शुड बी नोइंग। और ये सब आप जानते हो ना, इंटरनल डिस्टर्बेंस, आर्म रेबेलियन, ये सब टर्म, ठीक है। अच्छा, एक चीज और बताओ, व्हेन इंदिरा गांधी जी ड्यूरिंग दिस टाइम एक्चुअली लेड passing of a very famous constitutional amendment during this period 1975 to 77. What was that? एक बहुत फेमस अमेंडमेंट हुआ था, काफी सारी चीजें चेंज कर दी गई। इट इज कॉल्ड एज मिनी कॉन्स्टिट्यूशन आल्सो बिकॉज अ लॉट ऑफ थिंग्स गॉट चेंज्ड। यस, 42nd अमेंडमेंट 1976, है ना। A lot of things got changed and many of them were actually reversed later on. Not all, but many provisions of 42nd amendment was reversed by 44th amendment when Janata Party came to power. सब नहीं, but बहुत सारे provisions को change कर दिया गया था। 42nd amendment is called as mini constitution, है ना। इंदिरा गांधी जी, under इंदिरा गांधी जी the parliament passed the bill. Actually जब full majority होती है तो ये होता है कि of course whatever the prime minister will say, the MPs will keep on passing it, है ना। 44th amendment 1978, है ना, 2 साल बाद, है ना। So Janata Party government was there, so they tried to actually reverse many of the unjustified power to the government, है ना, which was actually given by 42nd amendment 1976. तो उसको रिवर्स करने को लोगों ने पूरी कोशिश की। हालांकि सब चीज रिवर्स नहीं हुई, ये भी बता दे रहे हैं। Still there are a lot of things of 42nd amendment which is implemented today, ठीक है, वो आपको पढ़ना है। अच्छा, प्लीज टेल मी, 44th amendment ने एक फंडामेंटल राइट को टच किया था। What is that? And what was that? क्या था वो? 44th amendment altered a fundamental right. What was that? Yes. Earlier, originally we had 7 fundamental rights. It got reduced to 6. And जो हटाया गया था, -1 जो किया गया था, that was right to property. And Article 31 के आसपास था और 19(1)(f) में भी था ना. Now it is in the Article 300 capital A. So now it is not a fundamental right. It is a constitutional right. It is mentioned in the constitution, but it is not a fundamental right. ठीक है। कभी कभी लोग स्टैचुटरी राइट लिख देते हैं, बट आइडियली द वर्ड यूज शुड बी कॉन्स्टिट्यूशनल राइट बिकॉज इट इज मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। सो राइट टू प्रॉपर्टी इज नो मोर अ फंडामेंटल राइट, ठीक है, जनरली स्पीकिंग। सो वी आर स्टॉपिंग दिस क्लास हियर, ठीक है।
Now I'll be meeting you tomorrow at 3 p.m. We are having class on Iran USA ceasefire, है ना. तो I think बात तो पूरी हुई नहीं, but we'll be having class on that. नहीं, Monday है ना. So Monday tomorrow 3 p.m. we'll be having class on MS set. Sorry, Monday 3 p.m. I'll tell you because as requested by you all, sir MS set पे class लो. So MS set पे class होगा. Tuesday 3 p.m. we'll be having class on Iran US ceasefire talks, जो कि शायद पूरी तरह हो भी नहीं पाए. एंड वेंसडे को आई एम प्लानिंग, जैसे आप लोगों ने रिक्वेस्ट किया, म्यांमार काफी ज्यादा न्यूज में रहा 4-5 साल में, है ना. म्यांमार फॉर एग्जांपल, आर्मी चीफ लाइक मिलिट्री को हैपन इन 2021, है ना, एटसेट्रा एंड ऑल. अभी रिसेंटली इलेक्शन हुआ था प्राइम मिनिस्टर का, प्रेसिडेंट का, एटसेट्रा. सो एज रिक्वेस्टेड बाय यू ऑल. कुछ लोग कह रहे हैं आर्टेमिस 2, तो मैं अब तो नेक्स्ट वीक ही वो प्लान हो सकता है, ठीक है ना, जो कि अभी प्लानिंग हो गई, मतलब अपकमिंग वीक में नहीं होगा, उसके अगले वाले वीक में कोशिश करेंगे आर्टेमिस 2, बिकॉज आई थिंक इट इज इंपॉर्टेंट. ठीक है, मान लो वर्स्ट केस में मैं नहीं पढ़ा सका, मैं पूरी कोशिश करूंगा. अगर नहीं पढ़ा सका तो आप पढ़ जरूर लीजिएगा आर्टेमिस 2, बट अदरवाइज आई विल ट्राई. ठीक है, सो वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट, है ना, टू एक्सेप्ट द रिक्वेस्ट. जो आप लिखते हो हम जनरली नोट्स में लिख लेते हैं. ठीक है, कोशिश करते हैं, है ना, कि वो सब हो जाए. सो थैंक यू एवरीवन. प्लीज प्रेस द लाइक बटन, शेयर दिस वीडियो. थैंक्स फॉर वॉचिंग. हैव अ नाइस डे.